Good morning from behind the wall of Akbar Fort, and this place is Sangam, the holy bank of river Ganga. And if I tell you about this fort, in 1863 this fort was built and it is made by Akbar, and the name of this fort is Akbar Fort, Akbar ka Kila. And after few years Britishers occupied this. One more interesting thing about this fort is that behind this fort there is a tree called Akshavat, and people used to come and sacrifice themselves. मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए सुसाइड कर दिया करते थे। और इस फोर्ट को इस तरह से डिज़ाइन किया गया था कि वो जो पेड़ था अक्षयवट वो इसके ही बाउंड्री में आ जाए। अक्षयवट को इसलिए अंदर अपनी बाउंड्री में किया था ताकि जो लोग हैं वहाँ पे सुसाइड ना कर सकें। और ये है मेरी बाइक, हम आए थे सुबह सुबह आपको दर्शन करवाने इस संगम की और साथ ही अकबर किला की। So now departing from this place, so go back to Akbar Fort. जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और लोग दूर दूर से आ रहे हैं। हम देख रहे हैं एमपी की गाड़ी, सीजी की गाड़ी, सीजी मतलब छत्तीसगढ़। दूर दूर से गाड़ियां यहाँ आती हैं दर्शन करने के लिए, स्नान करने के लिए। Not expecting this much crowd. सुबह सुबह के टाइम ही काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ है। और ये है होली संगम एरिया। जगह जगह पर लगी हैं बैरिकेडिंग। और इस एरिया को बोलते हैं परेड ग्राउंड। बहुत बड़ा एरिया है, पूरा ग्रीनरी है। यहाँ पर कुछ रेफ्यूजीज रह रहे हैं। एक और चीज़ इस जगह की हम बताएं तो जो रैली वगैरह होती हैं, मोस्टली जो पॉलिटिशियंस की रैली होती हैं वो इसी जगह पर होती हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा खुला मैदान है और यहाँ पे अरेंजमेंट सारी बड़ी आसानी से हो जाती है।